Now we're going to have our panel discussion on micro insurance products in Pakistan. So to set the stage for our discussion, my first question from you, Mr. Zishan, is that what exactly is microinsurance, and how does it differ from the conventional insurance products? माइक्रो इंश्योरेंस बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है टू प्रोटेक्ट लो इनकम पीपल इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और कम्युनिटीज in exchange of affordable premiums and providing small coverage limits. हमारे यहाँ पे जैसे अभी जिक्र भी हुआ है कि पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग होते हैं, लो इनकम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके स्मॉल रिस्क होते हैं, ठीक है, उनको कवर करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, देयर हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, डिसेबल इंश्योरेंस, उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक की कवरेज है, क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस आजकल काफी पॉपुलर हुई हुई है। तो ये माइक्रो इंश्योरेंस बेसिकली लो इनकम जो इंडिविजुअल होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट डिजाइन की जाती है। अब आपके जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि ये किस तरह डिफरेंट है कन्वेंशनल इंश्योरेंस से, तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस है माइक्रो इंश्योरेंस और कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर, सबसे पहले उसमें जो टारगेट मार्केट है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस हमारी जो माइक्रो इंश्योरेंस है बेसिकली इसके अंदर हम लो इनकम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, उनको टारगेट करते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस हम वहाँ पर मिडिल टू हाई इनकम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है मार्केट। इसके बाद हमारे पास जो प्रीमियम साइज आ जाता है कि जो प्रीमियम साइज माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर हो जाता है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली तरजीह ये होती है कि अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें और उनके जो स्मॉल रिस्क को कवर करें। यहाँ पर प्रीमियम साइज का डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस। हमारे पास जो प्रीमियम साइज होते हैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज होती हैं, कस्टमाइज पॉलिसीज होती हैं, रिस्क उनके बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से जो आपका जो प्रीमियम साइज होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। फिर उसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं वो फर्क आ जाता है कि हम जो माइक्रो इंश्योरेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी ज़्यादातर कम्युनिटीज़ के जरिए होती है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए होती है, ठीक है, और जो हमारी कन्वेंशनल इंश्योरेंस होती है वहाँ पर हम ज़्यादातर एजेंट्स के जरिए, ब्रोकर्स के जरिए और डायरेक्ट कंपनी की सेल के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो मैंने जैसे बताया था कि कवरेज लिमिट्स होती हैं हमारे पास, वो यहाँ पर जो माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर होती हैं वो हम उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं सिर्फ उनको पूरा करने के लिए, जो बेसिक लॉसेज होते हैं उनको कवर करने के लिए, बेसिक रिस्क को कवर करने के लिए बहुत स्मॉल जो कवरेज लिमिट्स होती हैं उनको डिजाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस हमारे पास सब इंश्योरेंस बड़े होते हैं। उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पॉलिसीज की वो हमारे पास सिंपल रखा जाता है, माइक्रो इंश्योरेंस को एक्सेसिबल रखा जाता है, जबकि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो जरा कॉम्प्लेक्स होती हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है यहाँ पर, वहाँ पर आपकी कन्वेंशनल अंडरराइटिंग होती है, क्लेम प्रोसेसिंग का जो टाइम आ जाता है उसका डिफरेंस आ जाता है कि आपके यहाँ पर आपको फास्ट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, इजी एक्सेस देनी पड़ती है, जबकि वहाँ पर हमारे पास उस क्लेम की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो एक टिपिकल जो हमारा होता है उस हिसाब से हमें करना होता है। Thank you for that insightful explanation. Are there any particular products जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा popular है market के अंदर with reference to the micro insurance products? माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में जो कॉमनली पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही है उसके अंदर हमारे पास हेल्थ आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी है, उसके अलावा लाइफ क्रेडिट इंश्योरेंस है, फिर फार्मर्स के लिए हमारे पास जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस आ जाती है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस आ जाती है। ये कोई 7-8 किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केट में प्रैक्टिस होती है माइक्रो इंश्योरेंस। All right. So moving on, why these products so common? So there are certainly going to be some hurdles also. So sir, अगर आप please थोड़ा सा हमें बताएंगे, do you face that there are some hurdles in the market जो आपको face होते हो while selling the micro insurance? जी। सबसे पहले यहाँ very thankful to this new platform जिसमें हम सबको invite किया यहाँ पे offering Nasir sitting here, Abbas और इतना सारा initiative था। Thanks to all audience उसके लिए आए हुए फंक्शन भी जाना बहुत जरूरी था आज। माइक्रो इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया कि मेनली जो हमारे पास इश्यूज है वो लाइफ हेल्थ है, क्रॉप है,
और अब मल्टीपल चैनल्स के जरिए जो हमारे पास मोबाइल ऐप के जरिए हमने शिफ्ट रखी है। तो आपका रनिंग स्टेट लाइफ तो सबसे पहले एक्सपीरियंस माइक्रो इंश्योरेंस में शायद हमें ही हुआ वे बैक ये अपने बिस्क के अंदर जो है कवर किया लाइफ का। इट वाज वेरी गुड प्रोग्राम फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो लो इनकम ग्रेड्स लोग थे जो बिस्क में कॉल कर रहे थे उनकी लाइफ कवर थी और थ्रू आउट पाकिस्तान प्रोग्राम चला प्रोग्राम था। फिर सेकंड जो हमारा प्रोग्राम था वो भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था सेहत सहूलत। यू ऑल नो अबाउट इट, हेल्थ में किया हम। ये दो प्रोग्राम तो बहुत सक्सेसफुल थे लेकिन ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट फंडेड थे। जो बेसिक इशू था जो अभी भी आपसे बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर वो ये होता है कि हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। माइक्रो इंश्योरेंस आप डायरेक्टली थ्रू एजेंट या किसी का रीच नहीं कर सकते टुवर्ड्स specific clients. आपको you either need an NGO, you need a government, you need microfinance institute, because एक लैब एक बिग स्केल के ऊपर इंश्योरेंस है, लो प्रीमियम की है, लो इनकम वाले लोगों के लिए है, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं उनके लिए है, और इसमें बहुत को हाई टेक किस्म की अंडरराइटिंग इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई क्लेम्स प्रोसेसिंग इसमें ऐसी इन्वॉल्व नहीं है। अभी जो मेन हिंडेंसीज है वो ये है कि इसके लिए अल्लाह के कुछ ऐसे रूल्स बन जाए जैसे कुछ बना भी रही है और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अगर मोर इंटरेस्टेड हो मोर कोऑपरेटिव हो विद इंश्योरेंस इंडस्ट्री मिलके बनाने के लिए। बिकॉज पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो ये दो बेसिक नीड हेल्थ और लाइफ ही कवर हो जाए तो शायद हमारा जो जनरल प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक हल हो सकते हैं। हमने खुद ये देखा है कि जब इवन बिस्क के अंदर भी जो बेड अनर की डेथ के बाद जिसको हम क्लेम दे देते थे बाकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी वो गेन एक्सपोज टू हायर रिस्क का कोई कवर भी नहीं था। इसीलिए आज से जो दूसरा इशू हमारे अंदर आता है कि जो अवेयरनेस नहीं है अभी भी 90% लोग बहुत सारी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के चार्ज हो रहा है उनके। जैसे आप लोग के अपने अकाउंट से भी पैसे चार्ज हो रहे होते हैं मोबाइल थेफ्ट के, लेकिन शायद किसी ने भी अपने मोबाइल थेफ्ट के ऊपर अपने बैंक अकाउंट से ये जो भी आपका बैंक है उससे चार्ज क्लेम नहीं किया होगा। हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें जो प्रोडक्ट मिली हुई है उसको हमने क्लेम कैसे करना है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज का और जो प्रोवाइडर्स हैं वो बैंक्स हैं या एनजीओज हैं वो अगर कम्युनिकेट करें सारी कम्युनिटी को जो इंश्योर्ड है और एक दफा आपका क्लेम लेने पर आपका कॉन्फिडेंस बन जाए तो शायद ये जो मार्केट है ये बहुत रैपिडली ग्रो करे जो अभी इतना कर नहीं रही। तो ये दो तीन इश्यूज हैं अगर इन पे काबू पा लें तो माइक्रो इंश्योरेंस जो है ना वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खासतौर पर बहुत बेनिफिट है। Thank you. So, how can technology enhance the effectiveness and outreach of microinsurance? Technology is the only way, और कोई वे नहीं है क्योंकि इस तरह की जो माइक्रो इंश्योरेंस है उसमें आप एजेंट्स हायर नहीं कर सकते बिकॉज इसमें ऐसा कोई कमीशन या बहुत ज्यादा इंसेंटिव इन्वॉल्व नहीं होते। तो ओनली टेक्नोलॉजी इज अ वे जिसमें आपके पास अब तो है बहुत ज्यादा चैटबॉट्स आ गए हैं, आपके पास एआई आ गया है, उसके अलावा आपके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं इजी पैसा जैज के शब्द देखते होंगे कि वो मुफ्त में इंश्योरेंस कर रहे हैं। इवन अभी जो मोबाइल एप्स हेल्थ की बन गई हैं IAPCP ऑल डॉक एक ऐप है they charge 5 rupees for your health insurance per day। तो the technology का सबसे vital रोल है और ये नहीं कह सकते हम कि जी हमारी कौम को ये टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। Everybody has got mobile phone, everybody has got Facebook, Instagram और सबको पता है। इस तरीके से हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है टुवर्ड्स आवर मैसेज पहुंचा सकते हैं और वो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत हेल्पफुल होगा टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस, how to get the micro insurance and how to get the claim. Thank you. So, what role can the government and regulators play in promoting microinsurance, and how can they help build a more inclusive financial safety net? I'm sure government can definitely, including legislation, can create, can help in promoting conducive environment for micro insurance by creating a learning environment, by ensuring customer protection, and most importantly by encouraging the innovation in this sector. This will definitely help us in scaling the
sustainability of microinsurance sector. The salient feature how the government and regulator can help in microinsurance sector is a regulatory framework developed dedicated to the development of microinsurance sector. Right now, the government and regulator are somehow lacking in this front. And simplifying licensing and I can say easing the procedures and procedures for microfinance institutions to license and then develop and scale up their operations. It all depends on the how government will create enabling environment for them. Most importantly, as my co-panelist just said, that technology is the only way to develop microinsurance, including its awareness among the masses by simplifying the e-KYCs, insurtech sandboxes, and digital processing. Most importantly, creating awareness among the masses and ensuring their protection and trust building among them is another measure by which the government and regulator can help in developing this sector. Public and private partnership is also an important pillar by which this sector can be developed. There can be risk pooling and public reinsurance, public-private reinsurance initiatives that can help in the development of this sector. And lastly, and most importantly, the data collection and market monitoring is also another area because once the progress and the development of this sector is properly measured, then the government and regulators can come to know what are the areas where they need to further help the industry and the microfinance institutions to help them develop this sector. Thank you. Thank you, Sarita. I think that's all for the microinsurance. Anyone has any questions? तो हम आपको mic भिजवा देते हैं. Related to microinsurance, if you guys have any questions, so you can please ask the panelists. Thank you, Sujata, for side on कि जैसा आपने कहा कि जो है वो टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग बट माय कंसर्न इज how many people of them are connected, how many of the people are familiar with the usage of that technology. So primarily I have observed that these people just use the mobile phone just for chit chat or usage of WhatsApp or even for making calls and nothing else. Even many times when we have to send a message, वो भले हम हिंदी को उर्दू में लिखते हैं या उर्दू में लिखे देंगे तो उनके लिए इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई मीन हाउ टू मैनेज ये आपकी जो तुम्हारा सेशन है कि और कैन वी नीड अवेयरनेस व्हेन दोस मैसेज वो नॉट फेमिलियर इवन with the basic Urdu language. See, the issue is, in microinsurance, you can't hire a good team, marketing team, or some brokerage house. You have to collaborate with three types of partners. One is government, number two is NGOs, number three is microfinance institutes. We have worked with all these three. And the very low income group, like we have got clients in Finca Bank, Apna Bank, and like these microfinance institutes. Very low IQ, very low education, and people are enjoying the credit life insurance which the banks give to them, and they are enjoying the claims and they are getting the insurance. The issue is, which I said, the technology, as technology can impart the concept of microinsurance to the people, that it exists. Because a lot of people do not know that this is an insurance.
we feel that conventional insurance is the only insurance. The concept of microinsurance to micro level, the only way is this. Because there is no other way, no else broker will go, no else agent will go to tell them, because there is no incentive in it. So we focus on it, like you listen the message. आजकल बरसात हो रही है, बरसात में सफर न करें, गुरेज करें, वो पोलियो डे, पाकिस्तान डे, कश्मीर डे. You listen the message in Urdu. So you come to know that there is something which is happening. So likewise, if you get a message in Urdu, common people on every call that there is microinsurance available for your health, for your life, for your crops, for your any other thing, they will realize that there is something, and then they will search and will go to find out where they could get it. Thank you. There's, I think, another question. The cast has a question. And you were talking about keeping the premiums very affordable for them and paying out premiums, helping people in trouble across the country. So if you look at the healthcare system of the country, which is very weak, and the current pandemics, issues with healthcare, as well as natural calamities, atmospheric and climate changes, this सबको देखते हुए we can anticipate very high loss ratios if everyone is rightly educated about the availability of insurance. So talking from a businessman's point of view, where does the profitability and sustainability come in? If we are facing such high challenges, such high loss events at such mass scale, how do we make this segment of insurance very sustainable and profitable as well? Because right now, one thing that probably is missing is awareness and understanding of the availability of insurance to a lot of these micro insurance segments. So how do you see this goes in balance with profitability as well as helping those who happen? One thing which your question is good, interesting. In short, your question is it a profitable business for insurance or not? In life, we have got very good experience, especially when talking about the risk. Credit time is good, no issue in it because the premium is charged according to the actual evaluation of the happenings of that incident. So, in these two things, insurance and you also as a state life, we are comfortable. One thing which you are saying that is the accidental and the health issues. Obviously, these issues are very critical all over the world. And life insurance companies are usually struggling to get very good profit in these two segments. Same here, either it is microinsurance and microinsurance, it's difficult to make much more profit in these two things. Because to predict and to assess the casualties, accidents, happenings, health issues, it's like slightly different because pandemics is just usually ruin all the parameters of the mortality tables. But these are a separate group, and usually we, in some cases, we exclude the pandemics and we usually cover the other things. We exclude the pre-ailment illnesses in health insurances. That covers and to some extent covers. However, your question is good. Is it profitable or not? But I think it's profitable still because there is a lot more market to penetrate and lot more premium and revenue to collect from them even to pay the claims. My colleague will definitely add it. देखिए इसमें आपकी जो बात है ना असल में ये प्रॉफिट तो कंपनी का पहला एक जो है वो पॉइंट होता है और उनकी जो है वो जरूरत होती है लेकिन मसला ये होता है कि आप कितनी मार्केट को आपने टैप किया ये सारा सेगमेंट आपका अभी अनटैप है हम पहुंचे कहाँ हैं अभी तक आप देखें ना हमारी जो अप्रोच है इंश्योरेंस कंपनीज की वो कहाँ तक है इंश्योरेंस का पहला रूल है कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी उसके अंदर आती है तो हमने अभी तो ये सारा अनटैप मार्केट है हमारी माइक्रो इंश्योरेंस का जिक्र कितने सालों से होना शुरू हुआ आप देखिए तो अभी हमें इसके अंदर बहुत सारा काम करना है तो हम जितना ये लार्जर स्केल के ऊपर काम करेंगे जितना ज्यादा काम बढ़ाएंगे उतना इसके अंदर प्रॉफिट भी आएगा हेल्थ अगेन जो सजाद साहब ने भी कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो चाहे कन्वेंशनल में करें या आप माइक्रो में करें वहां पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते लेकिन जो अदर सेगमेंट्स होते हैं आपके वहां से बिल्कुल आपको प्रॉफिट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर और एक अभी बहुत बड़ी मार्केट हमारी लेस देन 1% का जो है वो शेयर है जीडीपी के अंदर
तो हमारा बहुत बड़ा एरिया ऐसा पड़ा हुआ है कि वो भी अनटच्ड है, तो हमें वहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो ये आप देखें हमारे जो हमसाये ममालिक हैं, इंडिया बांग्लादेश की आप बात करें तो वहाँ पर ये माइक्रो इंश्योरेंस बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। आप वहाँ पर पर डे प्रीमियम्स के ऐड चल रहे होते हैं, 100-150 रुपए के प्रीमियम के ऊपर आपको एक बड़ी कवरेज दे दी जाती है। तो ये आपको हमें एज इंश्योरेंस कंपनी ये देखना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पे वीकनेस है। कंपेन होनी चाहिए, सोशल मीडिया एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर। तो हम उसके जरिए अपनी कंपेन्स के जरिए इसको अनटैप्ड मार्केट को जब तक हम टच नहीं करेंगे तो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। Thank you. There's another question. It's Hadi from 𝗘𝗵𝗇। आप लोग अभी बात कर रहे थे माइक्रो इंश्योरेंस की और उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया एम्बेडेड पार्टनरशिप जनरल, ठीक है, आप उसी के थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, यूजर तक। एम्बेडेड पार्टनरशिप्स में मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है, एम्बेडेड पार्टनरशिप में जो इंश्योरर को मेजरली प्रॉब्लम आती है वो जो दिखती है वो ये है कि उनके पास डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होता। आपने टेलीकोस की एग्जांपल दी, बहुत सारे जितने प्लेयर्स काम कर रहे हैं, डेटा शायद उस वक्त आता है जिस पर क्लेम भी आ चुका होता है, आपको यही नहीं पता कौन कौन लोग ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं। कंसिडरिंग जो हमारा डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज हैं, जितना आपका इंश्योरेंस में डेटा पे काम हुआ है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा ब्रिज है जो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके? क्योंकि पर्सनली आई बिलीव कि ये इशू ऐसा है कि अगर ये सॉल्व कर लें तो आप ज़्यादा अच्छी ऑफर्स कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। लेकिन ये गैप एक ग्रे एरिया है, ग्रे जोन है। आप तीनों की एडवाइस है। I agree with you because right now जिस तरीके से हम लोग ये माइक्रो इंश्योरेंस का बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, we are absolutely relying on the data of either micro insurance, micro financial institutions, or say mobile telcos or any other intermediary who is in fact giving the business to micro insurance. डेटा जो है उसकी इनफैक्ट इंश्योरर के पास जिस तरह से रैंक करके हम बिजनेस चल रहा है, इंश्योरर के पास वो पूरी तरह कैप्चर भी नहीं हो पा रहा। वी आर ओनली बीइंग गिवन monthly basis some Excel sheets with limited information in it just to capture premiums on our monthly premium business. And same goes with in the case of claims as well, where we do not have to go into the detailed verification of the claim, just to rely on the basic information or basic documentation which is provided by the as per the protocol of partnership between the insurer and the microfinance institution. Obviously, it will take time to catch up, to develop this sector on how we can emulate and learn from our neighboring countries, as we just mentioned, how well they are in fact now able to develop this sector on modern lines, on scientific basis, so that we are able to charge the right pricing and pay the claims which are actually legitimate. Obviously, we'll take that. And I'll answer your question. Thank you. We'll take this one last question from Namansa. Then we have to start with the next. Okay, so the question primarily is when it comes to microinsurance, what I see at least over the last 10 years is that we see a lot of noise around terms of volume of business coming in. A lot of, we're talking about millions of customers. But what we don't understand is how many of those customers are actually truly customers. How many of them are actually repeat customers? How many of them are new customers? What's the cost of retaining those, or acquiring those customers? And the most important, being this selling that is associated with microinsurance. So, looking at all these challenges, how do you foresee, a solution for this particular segment to grow? Because I don't see the insurer making it out. I don't see the customer happy trust level. So, with all the new initiatives going on, how do you see the light again?
सबसे पहले तो नुमान साहब का सवाल सुनना तो जवाब देने के लिए वक्त चाहिए बिकॉज यू मस्ट क्लैप फॉर हिम ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्रोफेशनल इन द जस्ट he is very right because he is working on microinsurance for last many years and he has got very experience. Sir, इसमें situation ये है कि as a state life faith card was one of the microinsurance program and we have got very good response from the market. People were using that facility and they were again coming with their families, their relatives to use this the facility of the healthcare. Which means that we are retaining our customers. The customers are coming back. Likewise, in a credit line, because all these programs is through microfinance banks, keep on renewing that policy years and years for credit line, which means that our customer is satisfied and he is getting claims and they are coming back to us. The issue main which I realize is, I am not criticizing, the insurance which is sold to the mobile and mobile apps and mobile companies. Because here they are not reaching to the consumer and policy holder to tell them that what they will give to you. They will just give a message to have that insurance get 5 rupees per day. So you said okay, you just send a message and they start deducting that amount. But then they never say you that in response to that amount, which will get. And usually 99% people do not get anything of it. And if after 1 month, after few months, I receive the same message, I say no, because I have not utilized that facility. So it must be the responsibility of that provider. And that is not the insurance company, that is that mobile app or the mobile company who is providing it or some other company is providing it. I think the stress and the focus should be on that companies to convey to their consumers that what facilities will they get, and they should have some comprehensive or some picturable solution of that issues to their customer. And then I think so, if they do it, they will get much more revenue, they might get much more customers. As an insurer, I don't think so that any insurer have any problem in paying any claim, either it is health, either it is life, either crop, either anything else. Insurers are always willing, because when they receive the premium, they pay the claims. Your question is definitely valid, that we should think as an insurer that as a part of their partners, we should also communicate to the masses that they have got this facility, they have got this insurance. So, in case more people come, definitely the ultimate advantage will go to the insurance industry. Correct. Thank you. Thank you. मेरे ख्याल में इसमें जो मुझे लगता है ना कि हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर कि जो वो हमारे पास हैं, वो जैसे अभी सर ने भी बताया कि मोबाइल के थ्रू जो हम दे रहे होते हैं, मेरी नज़र से एक पॉलिसी इस तरह की भी गुजरी थी कि जो डोनर बेस्ड एनजीओ होती हैं वो मुख्तलिफ रूरल एरियाज के अंदर जाके लोन्स, स्मॉल लोन्स जो है वो डिस्बर्स करती हैं. उन लोन्स के साथ भी वो लोग जो है वो माइक्रो इंश्योरेंस देते हैं, उसके अंदर लाइफ भी होती है, उसमें हेल्थ भी होती है. लेकिन हमारे यहाँ मसला ये आता है, जो मुझे नजर आता है वो कि बेचने वाले को भी नहीं पता होता कि वो क्या सेल कर रहा है, और खरीदने वाले को भी नहीं पता होता. तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी अवेयरनेस पे काम करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बेहतर बनाएं, और फिर इसको सिंपल रखना पड़ेगा हमें. इसको सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन के जरिए हम अगर देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और टाइम जब क्लेम का आता है तो उसके ऊपर उनकी जो क्लेम सेटलमेंट है वो जितना इजी करेंगे तो उनका ट्रस्ट और अवेयरनेस दोनों बहाल होंगे, तो फिर हमारे कस्टमर्स भी रिटेन होंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ट्रस्ट भी इंशाल्लाह करेगा. Thank you everyone. Thank you so much for your time and all the open discussion. Thank you.